Hey guys, Saurabh this side. Today we are going to see Golang interview question lecture 3. So first question will be how to check variable type in Golang at runtime. So this is the common Golang question where they will ask how you can verify the Golang variable at runtime. So few things are there. We have already learned about this type assertions useful for extracting and checking specific types from an interface. If we have an interface and we want to find a specific type, like what is the type, or if we want to extract data from that interface, तो इसमें ना हम लोग जब इंटरफेस को एक्चुअल डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है उस प्रोसेस को हम लोग टाइप असर्शन बोलते हैं. टाइप स्विच कन्वीनियंट फॉर हैंडलिंग मल्टीपल टाइप्स इन अ सिंगल ब्लॉक. सो टाइप स्विच भी होता है जिसमें हम स्विच के अंदर टाइप भेज सकते हैं. अगर इंटरफेस है, इंटरफेस डॉट टाइप अगर हम देते हैं तो एंड केसेस में हम वो टाइप देते हैं, जैसे इंट दे दिया, कैर दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया. इस टाइप से जितने भी टाइप्स हैं वो अगर हम स्विच मल्टीपल केसेस में दे सकते हैं तो वहाँ पर भी रन टाइम पर हमको पता चल जाएगा किस टाइप का डेटा आ रहा है. रिफ्लेक्ट पैकेज provides details, type and value information suitable for advanced use cases requiring dynamic type inspection. And dynamically, if we have to find the type of a variable, then reflect package will provide method called type of. It will print the type of. And other normal, if you want to print the type, then fmt.printf you can do with %t option. It will print the type. Now second question will be slice and map data structure in Go. What is slice we have already seen before. Difference between array and slice also we have seen. If you have not seen, you can go to lecture number 2. There you will find that 4 to 5 differences I have explained there. You can refer that video and you can note it down. Now slice and maps. Main points that interviewer wants to hear from you. Slice and maps. Slice are ordered collection of elements indexed by integer slices. See, you can tell the definitions of the slice. Okay, and you can tell definition of map also, like it will store key value pair, map will store key value pair, but in slice it will not store key value pair. So what exactly they want from you? So they want slice or ordered collection of element indexed by integer indices. जो slice होते हैं वो ordered collection होते हैं और जो की इसमें होती है वो इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स बाय इंटीजर. मैप्स की बात करें तो मैप्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैप्स जो होते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर keys can be of almost any type and values can be of any type. ये सबसे important question होता है. Directly they ask, they can ask like map data structure is ordered or unordered, so you have to tell here that is unordered. Next question they will ask how to manage dependencies in Golang. So dependencies in Golang is done primarily through the use of modules. If you have worked on Golang and basic, if you know, then go.mod file you have seen, go.sum you have seen. So Go module provides a way to manage dependency versioning and reproducibility of builds. Okay, so few steps are there how you can create that Go module. Firstly, you have to initialize it. Initialize a new module using go mod in it, and the module name you can give. It will create go.mod file which defines the module's path and records the module's dependency. तो जो गो मॉड फाइल होती है उसमें रिकॉर्ड होते हैं मॉड्यूल डिपेंडेंसीज के रिकॉर्ड होते हैं. इसको गो मॉड डॉट इनिट से गो मॉड इनिट से हम बना सकते हैं. एडिंग डिपेंडेंसी एडेड टू योर मॉड्यूल व्हेन यू इंपोर्ट पैकेजेस फ्रॉम अदर मॉड्यूल्स. व्हेन एवर यूर जब भी हम लोग पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं दैट टाइम इट विल बी एडेड. अपडेटिंग डिपेंडेंसी टू अपडेट द डिपेंडेंसी वी कैन यूज go get command will be used for updating the dependency in go.mod. See, go mod tenant will create the go mod, but it will not add the or update the dependency. So for that you can use go get. Remove unused dependency, you can use go mod tidy. Go mod tidy, what it will do internally, it will delete it and then it will create that again go mod file. So go.sum, even go.sum it will create. Go.sum is automatically generated and contains the checksum of the dependency, ensuring the integrity of the downloaded modules. जो go डॉट सम होती है उसमें चेक सम होता है, डिपेंडेंसीज का चेक सम होता है जो हम यूज़ कर रहे हैं. By using go mod command you can easily add, update and clean up dependency while ensuring reproducibility and versioning of your builds. This system simplifies dependency management and make it easier to maintain and share your Go project. What does it mean by statically typed language?
if you will tell initially what is Go, at that time you may tell Go is a statically typed language. So they will ask what is the statically typed language mean. So a statically typed language is one in which the type of variable is known at the compile time rather than runtime. So at compile time only you will get to know the type of the variable. This means that the types of all variables are explicitly declared and checked by the compiler before the code is executed. तो इसका मतलब ये हुआ जो हम वेरिएबल्स को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर रहे हैं और उसका जो टाइप है वो कंपाइलर के द्वारा ही चेक किया जा रहा है. कंपाइल टाइम पर ही इसका हमको पता चल जाएगा कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है, कितनी मेमोरी एलोकेट करना है, ये सब कंपाइलर टाइम पर पता चल जाएगा. Statically typed languages ensures that types are checked at compile time which leads to early error detection. हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कंपाइल टाइम पर हमको एरर्स मिलती हैं, कुछ कंपाइलेशन एरर होती हैं. तो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज क्या करती है, इंश्योर करती है कि हमको जो भी एरर्स हैं वो कंपाइल टाइम पर मिल जाएं. बेटर परफॉर्मेंस, क्योंकि हम ऑलरेडी कंपाइल करके बाइनरी फॉर्मेट जनरेट कर चुके होंगे तो परफॉर्मेंस बेटर रहेगा. इम्प्रूव कोड सेफ्टी एंड रीडेबिलिटी. This characteristics is one of the foundational aspects of language like Go, enabling robust and efficient software development. You can answer these things, and they will definitely impressed. So, what is function closure in Golang? This is again one important question you may forget while interviewing. So you have to remember what is function closure. In Go, a closure is a function value that reference variable from outside its body. The function may access and modify this variable. So any variable if being modified by a function, then that is called a closure. A closure is a function value that reference variable from outside its body. उसकी बॉडी के आउटसाइड से ही उसको रेफरेंस कर लेता, रेफर कर लेता है. द फंक्शन में एक्सेस एंड मॉडिफाई दिस वेरिएबल एंड वाई फंक्शन दोज वेरिएबल को एक्सेस करके मॉडिफाई कर सकता है. दिस मीन्स द फंक्शन that closes over its environment, capturing and preserving the surrounding context where it was created. Closure are useful for maintaining state across multiple function calls without using global variables or other state management mechanism. So closure कहाँ पर यूजफुल होते हैं, जहाँ पर हम लोगों को स्टेट मेंटेन करना हो, मल्टीपल फंक्शन कॉल के लिए स्टेट मेंटेन करना हो तो उस टाइम पर इसका यूज़ होता है. जब हम ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना नहीं चाहते हैं और कोई स्टेटमेंट मैकेनिज्म मेंटेन करना नहीं चाहते हैं तो इस केस में हम क्लोजर का यूज़ कर सकते हैं. It can be used for even handlers and callbacks, iterators and generators memorization. और इसका यूज़ handlers as a callback और iterators generators के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. Advantages are like encapsulation, modularity, functional programming. हाँ, so encapsulation कैसे रहेगा? So directly I am telling function closure is nothing but the anonymous function that is declared inside the function. So inside the function it will be there. And so encapsulation means we are going to hide something inside one more function. Okay, modularity, functional programming, it will be used in functional programming. Now next question will be what is function receiver and variadic function in Golang. These are the important concept and unique in Golang actually. In Go, a method is a function that has a special receiver argument. The receiver is a value or a pointer to a value of a particular type. मेथड क्या है? मेथड पता है, एक फंक्शन रिसीवर होता है. फंक्शन रिसीवर मीन्स जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के द्वारा कॉल कर सकते हैं और फंक्शन डिफाइन करते टाइम पे हम स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं बिफोर मेथड नेम. The receiver is a value or pointer to a value of a particular type and it enables you to define methods on that type, allowing the method to access and modify the value of the receiver. Here you can modify the value of the receiver as well. Variadic function क्या होता है? Variadic functions are a function that can accept a variable number of arguments. ओके, वेरिएबल फंक्शंस क्या होते हैं? जो कि वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं. द ellipsis is used in the function signature to specify that the function can take any number of argument of a specific type. Ellipsis means 3 dots can be used to maintain the context. Variadic functions and slicing. Now next question is types of channel in Golang. This is common interview question. If you are giving any interview, if it is for a small company also, they may ask, and you are attending for Golang, then they will definitely ask what are the type of channel. So channel basically you have to tell there are two types. One is buffer channel, other one is unbuffered channel. तो unbuffered channel क्या होते हैं? Unbuffered channel is a channel with no capacity to hold data. That means that sending and receiving operation on an unbuffered channel are synchronous and block until both the sender and receiver are ready. तो इसमें क्या होता है अनबफर्ड चैनल में सेंडर और रिसीवर जब तक दोनों रेडी नहीं रहेंगे तब तक के लिए उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को ब्लॉक कर देगा ये. ओके,
एंड इसमें कोई कैपेसिटी नहीं होती है, तो दोनों रेडी होनी चाहिए, सेंडर एंड रिसीवर. A buffer channel has a capacity to hold a specific number of elements. Sending to a buffer channel does not block if there is space in the buffer, and receiving from a buffer channel does not block if there are elements in the buffer. तो buffer channel में क्या होता है, buffer channel में कुछ कैपेसिटी होती है, जबकि buffer में कैपेसिटी नहीं थी. तो buffer channel में कैपेसिटी होती है और हम लोग buffer channel में डेटा सेंड कर सकते हैं जितनी भी कैपेसिटी. लेट्स से 10 हमने कैपेसिटी डिफाइन की है buffer channel की, तो हम 10 डेटा पोस्ट कर सकते हैं. इवन रीड करने के लिए कोई भी कोरूटीन नहीं है उस टाइम पे भी. सेम अगर सेंड करने के लिए कुछ कोरूटीन नहीं है तब भी हम रिसीव कर सकते हैं दैट टाइम. सो हाउ गो एनकरेजेस एरर हैंडलिंग इन गोलैंग. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई हैव रिपीटेड अगेन, बट आंसर विल बी लिटिल डिफरेंट. रिटर्निंग एरर एज वैल्यू. फर्स्ट थिंग, हाउ टू हैंडल. Firstly, you can return error as value. Customizing errors by implementing error method of error interface. How you can customize error? In Golang we have interface called error that you can implement. Defer, panic and recovery mechanism is there. Error package, creating new errors with errors.new and wrapping it with additional context. You can wrap additional context, additional data using %w. Sentinel errors. Sentinel errors are predefined errors value that are exported and compared directly. They are used for common errors case and facilitate a clear and concise error handling. Sentinel errors क्या होती हैं? यह predefined error value होती हैं जो कि export and डायरेक्टली कंपेयर की जा सकती हैं. दे आर यूज फॉर कॉमन एरर केस. एरर अनरैपिंग क्या होता है? यूजिंग एरर्स एलएस एंड एरर एस फॉर हैंडलिंग स्पेसिफिक एरर्स. in error package we are having few methods ls and as. With that we can unwrap it. Okay, next question, important question. What is Rune and UTF-8 and byte and Golang? तो बाइट की बात करते हैं. सबसे पहले बाइट क्या होता है? इसमें बाइट है बाइट एलियाज ऑफ यूनिट 8. इन गोलैंग यूनिट 8 एक डेटा टाइप है. इसका एलियाज बाइट क्रिएट किया गया है गोलैंग में. इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल बाइट मीन्स वन बाइट इक्वल टू 8 बिट. ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट रॉ बाइनरी डेटा और ASCII कैरेक्टर. सो ASCII कैरेक्टर इट विल होल्ड यूजफुल व्हेन डीलिंग विथ रॉ डेटा, बाइनरी फाइल्स और एनी केस वेयर यू नीड टू मैनिपुलेट डेटा एट द बाइट लेवल. Rune की बात करें, what is Rune? Alias of int 32. Rune is the alias of int 32. It represents a Unicode point which is an integer value that can represent any Unicode characters. Any Unicode characters, if it is there, that time you can use Rune. Useful when dealing with text that may include a non-ASCII character such as international text or emojis. So Rune is the best for int 32. It is the alias. UTF-8 is a variable with character encoding used for electronic communication. It can represent every character in the Unicode character set. UTF-8 is the default encoding for a string in Go, which means that Go's string are a sequence of bytes encoded in UTF-8. UTF-8 is nothing but the Rune. Rune is nothing but the int 32. Okay. So if one scenario will be coming for sorting, I will tell in upcoming lecture where you have to use Rune only in that case, or UTF-8 you have to use. So if they are telling UTF-8, Rune or int 32, all three are same. Difference between two types of slice declaration. This is not actually the question they will be asking, but just for clarification, what is the difference between these two declarations that you should be aware. So that's why I have given declaration using where you can declare where a and like this, and shorthand declaration like colon you can give. First one will be preferred because memory allocation will not be done whenever you are going to declare using where. At that time memory will not use until you are using it, but in case of shorthand it will allocate the memory as well. What will be the benefit of this series? Go concept will be cleared. इंडस्ट्री ट्रेंड्स में जो भी फॉरवर्ड यूज़ हो रहा है, गोलैंग कैसे यूज़ हो रही है वो यूज़ होगा. माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हम लोग समझेंगे. ऑल इंटरव्यू क्वेश्चन समझेंगे. जो भी न्यू नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें हम गो
के बेसिक कंसेप्ट को, रूटीन, चैनल, वेट ग्रुप, टाइमर, स्ट्रक्ट इंटरफेस, मैपर, स्लाइस, स्ट्रिंग, सब कुछ देखने वाले हैं। एल्गोरिथम सबसे पहले इसको मैं प्रायोरिटाइज करने वाला हूँ, एल्गोरिथम रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम लीड कोड, जहाँ पर हम लोग जो कॉमनली आस्क क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को लेंगे, जैसे जस्ट एग्जांपल, और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से देखेंगे। जैसे रिकर्सन की बात करें, रिकर्सन नॉट रिकर्सन, फैक्टोरियल की बात करते हैं, फैक्टोरियल को हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, रिकर्सन से कर सकते हैं, लूप से कर सकते हैं, और रूटीन, वेट ग्रुप एंड चैनल का यूज़ करके भी इसका यूज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट बेस्ट कौन सा है ये हम आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। रेस्ट एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं वो देखने वाले हैं। जीआरपीसी का यूज़ करना वो भी सीखने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिंग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बेस्ड एप्लीकेशन। सो हम इतना सब कुछ सीखने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।